Hello everyone, I'm Ashmita from Saurav's classes. Here we are going to solve questions from the Civil Services Examination of this year, that is 2023. And हम लोग यहाँ पे कुछ handful of questions discussion करेंगे, not all of them, because हम यहाँ पे details में discussion करने वाले हैं. तो अगर आप ऐसे ही interactive sessions चाहते हैं या फिर डिटेल्स में डिस्कशंस चाहते हैं ऐसे क्वेश्चंस का, तो आप हमारे क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं. फॉर दैट यू जस्ट नीड टू गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड सभी डिटेल्स वहाँ पे आपको मिल जाएगा. फॉर लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पोर्टल एक्सेस, फॉर मॉक टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशंस, इंटरैक्टिव सेशंस, स्टडी मटेरियल्स, सबका डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस है, यू कैन पोस्ट डाउन योर क्वेश्चंस बिलो इन द कमेंट बॉक्स. चलिए क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. Starting with the very first question, that is question number 28. Consider the investments in the following assets. Brand recognition. Now, brand recognition is considered as an intangible asset. मतलब जिसको हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है, देख नहीं सकते हैं, इसको हम intangible कहते हैं. Tangible का मतलब है जिसको हम छू सकते हैं. तो brand recognition can be termed as an intangible asset, and it represents the value of a company's brand name about its reputation and also the customer recognition. Okay, that is what brand recognition is. Secondly, inventory. Inventory का मतलब क्या है? Inventory एक tangible asset है, तो ये हो गया intangible, inventory हो गया tangible. तो tangible तो inventory एक tangible asset है as it consists of physical goods which is held by a company for sale or production. थर्डली आ रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है जैसे कि पेटेंट्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, या फिर ट्रेडमार्क्स होते हैं, या फिर ट्रेड सीक्रेट्स जो है, ये सभी इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आते हैं. यहाँ पे भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल. And this is the intellectual property is considered as an intangible asset as it represents valuable legal rights and protections. ये हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. लास्ट में है मेलिंग लिस्ट ऑफ द क्लाइंट्स. तो मेलिंग लिस्ट ऑफ द क्लाइंट्स, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स एक इंटेंजिबल एसेट का एग्जांपल है एंड इट रिप्रेजेंट्स अ कंपनीज डेटाबेस ऑफ द कस्टमर इंफॉर्मेशन व्हिच होल्ड्स वैल्यू फॉर मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर्पसेस के लिए ये मेलिंग लिस्ट रहता है क्लाइंट्स का. तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है, मतलब कंसिडर द इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉलोइंग एसेट्स. तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट्स है वो ऑन ओनली 3 इट वुड बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो है कि क्वेश्चन नंबर 29. कंसिडर द फॉलोइंग. डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस. डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का मतलब है कि ये क्राइटेरियन है विच कंसिडर फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन साइज या फिर ग्रोथ रेट या फिर डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स. ये सभी डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के अंदर आता है. नेक्स्ट है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी. एस है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी. दिस क्राइटेरियन टेक्स इनटू अकाउंट द एफर्ट्स और इट टेक्स इनटू अकाउंट द फॉरेस्ट कवर rather I would say and the ecological factors of a state. Okay, so ये आते हैं फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के अंदर. Third is governance reforms. This criterion actually helps to assess the efforts which is made by a state in implementing governance reforms and achieving good governance practices. ठीक है, तो governance reforms के अंदर ये सभी चीजें आती हैं. लास्ट थिंग है फोर्थ ऑप्शन है स्टेबल गवर्नमेंट. स्टेबल गवर्नमेंट criterion evaluates the stability of the government in a state. Okay, and fifth one tax and fiscal efforts. टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स का मतलब है ये क्राइटेरियन यहाँ पे से दिया गया है सो दैट इट शोज द एफर्ट्स which is made by the state to mobilize the tax revenue and promote the fiscal discipline. Okay, so this will come under tax and fiscal efforts. तो इसके बाद जो क्वेश्चन है उसी को हमें आंसर करना है. दैट इज फॉर द हॉराइजॉन्टल टैक्स डेवल्यूशन द 15th Finance Commission used how many of the above as criterion other than population area and income distance. यहाँ पे आप लोग
सभी 5 को कंसिडर कर सकते हैं जिसको कंसिडर किया गया था बाय द 15th फिनेंस कमीशन as a criteria as criterias rather other than population area and income and distance. Okay, so all 5. Last question for today's class. Consider the following infrastructure sectors. फर्स्ट वन है अफोर्डेबल हाउसिंग. तो ओके चलिए देख लेते हैं कौन से पॉइंट्स हैं. मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी. Okay, over here there is a full stop. On how many of the above does UNOPS Sustainable Investments in Infrastructure and Innovation, that is S3I, initiative focus for its investments? तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो 4 ऑप्शंस हैं, मतलब ऑल 4 पे आप टिक कर सकते हैं. 4 ऑप्शंस का मतलब है अफोर्डेबल हाउसिंग, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर एंड रिन्यूएबल एनर्जी. 4 ही आप मतलब कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, तो ऑल 4 वुड बी योर करेक्ट आंसर. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. अगर आपको ऐसे ही डिस्कस करना है इन डिटेल्स all these questions which came in the examination, then आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं. कोई भी एग्जाम प्रेपरेशन हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो, चाहे वो एंट्रेंस बेस्ड हो, या फिर अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं या हियरिंग सेशंस चाहते हैं, उसके लिए आपको हमारे क्लासेस में भर्ती होना पड़ेगा. नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी डिटेल्स दिया गया है फॉर joining our classes. Do visit the description box, and अगर आपके मन में कोई doubts है, do post your doubts in the comment box below. That's it for today's class. Let's meet once again in our next class.